Okay, we'll go live in a minute. We are live now. नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि में। सर्वप्रथम आप सबको शारदा दिवस एवं गौरी तृतीया की अनेकों शुभकामनाएं। कोर शारदा टीम पिछले कई वर्षों से गौरी तृतीया के इस पावन पर्व को शारदा दिवस के रूप में मनाती आ रही है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। कश्मीर में इस त्योहार को मनाने की अपनी एक अलग प्रथा थी। इस दिन कश्मीर में कुल गुरु हमारे घरों में आके सभी बच्चों को माता शारदा की एक चित्र भेंट किया करते थे। कश्मीर में इस दिन को माँ शारदा के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। जहां शेष भारत में इस शुभ दिन पर माँ पार्वती की पूजा की जाती है, वहीं कश्मीर में इस दिन को माँ सरस्वती के पूजा के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन कश्मीर में स्थित शारदा पीठ के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ आदिकाल से दीक्षांत समारोह आज ही के दिन हुआ करता था और इसी कारण इस दिन को कश्मीरी पंडित शिक्षा आरंभ के दिन के रूप में भी मनाते हैं। शारदा देवी निसंदेह कश्मीर की पवित्र भूमि में पैदा हुई थी, जिसके तदनुसार शारदा पीठ और शारदा मंडल के रूप में नामित किया गया था। पूरे उपमहाद्वीप में देवी शारदा को समर्पित एकमात्र प्राचीन मंदिर 1947 के पूर्व के इतिहास में कश्मीर में स्थित था। यहाँ जो लिपि विकसित हुई उसका नाम भी शारदा है। पश्चिमी हिमालय लिपियों में शारदा लिपि का गौरवपूर्ण स्थान है। कश्मीर न केवल एक भूमि है, यह कई मायनों में अपने आप में पूर्ण और परिपूर्ण विश्व है, जिसका प्रमाण हमें भारत के हर कोने में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। अपने यज्ञोपवीत समारोह में कर्नाटक में कुछ सारस्वत ब्राह्मण आज भी 7 कदम उत्तर यानी कश्मीर की ओर बढ़ाते हैं और फिर पीछे हटाते हैं, जिससे शारदा के साथ अपने संबंध को अक्षुण्ण रखने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार माघ तृतीया या गौरी तृतीया की इस ऐतिहासिक परंपरा को जीवित रखने का हम भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को मैं शारदा कुल गीत गाकर आगे बढ़ाती हूँ, जिस गीत की रचना डॉक्टर चमनलाल रैना जी ने की है। अथ शारदा कुल गीतम। प्रणमामि शारदा श्रीदेवी सुरपूजिता, प्रणमामि शारदा श्रीदेवी सुरपूजिता। शाण्डल्य मुनिनः सनक आदि सेव्या, वेदादिशास्त्रवचनैः प्रतिपाद्यमाना, त्रिकाचार्य संहिता सारस्वत स्वरूपा, शाक्त शैव संस्कृति त्रिक निदान भूता। प्रणमामि शारदा श्रीदेवी सुरपूजिता,
प्रणमामि शारदा श्रीदेवी सुरपूजिता स्मृतिवक्त्रां शारदा लिपि स्थितां हंसगतितां देवी वर्णात्मिका सप्तमात्रिकां चक्रनिलया गौरी तृतीया पर्वे माघमासस्य तिथ्यां स्नातक दीक्षांत कुलगीत वन्द्या प्रणमामि शारदा श्रीदेवी सुरपूजिता प्रणमामि शारदा श्रीदेवी सुरपूजिता। Jai Ma Sharda. Now moving to the most important part of this program, the book Shakti Upasana, which is edited and interpreted by Dr. Chamanlal Raina ji. This book is based on the original Sharda manuscript, which was written by Rajnak Maheshwar Razdan ji. And to launch this book, we are honored to have with us Dr. Sudhir Sopory ji. Professor Dr. Sudhir Sopory ji is currently Distinguished Fellow and Senior Emeritus Scientist at the International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, New Delhi. He earlier worked as a professor at the School of Life Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, where he also served as Vice Chancellor for one term of 5 years. He has been conferred National Civilian Award Padma Shri, S.S. Bhatnagar Award of Council of Scientific Industrial Research. During his tenure as Vice Chancellor, he also encouraged programs on learning Sharda script at the Center for Sanskrit Studies. Now I invite Dr. Sopory ji to please take over and launch this book. Thank you. धन्यवाद वरण्यका जी। बहुत खुशी का अवसर है कि आज एक छोटी सी बातचीत जो मेरी चमनलाल राणा जी के साथ कुछ दिन पहले ऑनलाइन पे हुई थी, और वो एक छोटी सी बातचीत आज एक किताब के रूप में, एक पुस्तक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है। आज मुझे खुशी भी है इस किताब को का विमोचन करते हुए, लेकिन अंदर मन में थोड़ा सा खटक भी रह गई, और वो ये कि जब इस किताब की शुरुआत होने जा रही थी, मैंने देवी प्रभा जी से इसकी आज्ञा ली थी, क्योंकि चमला जी ने कहा उनसे पहले पूछ लें, और उन्होंने इसकी इजाज़त दी और कहा हाँ अच्छी बात है, इसको अगर आप लोगों के बीच में अब लाएंगे। 30 साल हो गए जब से उनके पास ये ओरिजिनल टेक्स्ट जो महेश्वर राजदान जी ने लिखा था उनके पास आया था, जो स्वामी जी ने उनको दिया था, और उसके इतने सालों के बाद आज उन्हीं की प्रेरणा से चमनलाल राणा जी की जो मेहनत, जो काम किया इन्होंने, एक रिसर्च किया इसके ऊपर, उसके बेसिस पे आज ये शक्ति उपासना की बुक यहाँ पे लॉन्च की जा रही है। आज प्रसन्नता होती कि प्रभा जी हमारे साथ होती, वो इस किताब को देख पाती कि ये किताब आ रही है। मैं इसको अब आपके सामने रिलीज करता हूँ, इसको विमोचन करता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है इसको? हाँ जी देख पा रहे हैं। इसकी कई कॉपियां मेरे पास आ चुकी हैं और पब्लिशर के पास भी है, और जो भी इसको लेना चाहेगा मुझे उम्मीद है वो इससे बहुत बहुत लाभान्वित होगा इसको पढ़ के। एक ही बात, इसमें किस तरीके से इस चीज को फाइनली जो ओरिजिनल शारदा लिपि में महेश्वर राजदान ने लिखा था वो कैसे प्रभा जी के पास पहुंची, और इसकी पीछे की जो कथा है वो मुझे लगता है चमनलाल राणा जी खुद ही बताएंगे। हालांकि वो कह रहे थे
मीना जी इसके बारे में बताएंगी, लेकिन वो कह रही है मैं वो खुद ही इसके बारे में बोलें तो अच्छा होगा। और अंत में एक ही चीज कहूंगा कि कुछ ही महीने पहले जब इस किताब का शुरुआत होना था, तो इसकी जो ओरिजिनल लिपि थी वो प्रभा जी ने आपको शुगर देख के इसमें रखी हुई थी। वो इसको कहती थी ये बहुत बड़ा आपका रक्षक है, जो उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, और इसी में उन्होंने इसको संभाल के रखी थी। पिछले 100 साल 80 साल हो गए होंगे जब से ये महेश्वर राजदान जी ने अपने हाथों से लिखा था, और ये इस तरीके से उन्होंने सारी लिखी हुई है, और उसको इन्होंने बड़े उससे अपने पास रखा करती थी इसको, कि ये उनका एक रक्षक है, रच बनाने चाहिए रच। और कुछ महीने पहले उन्होंने ये रच मीना जी को दे दी, तो हमें थोड़ा सा शक हुआ कि इतने सालों बाद उन्होंने ये क्यों इनको दे दिया, क्या सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। बड़ा अच्छा लगता कि ये किताब वो देखती और कहती कि आज महेश्वर राजदान, जिसको कश्मीरी जो कम्युनिटी है शायद भूल चुकी है, ये स्वामी लक्ष्मण जी के टीचर थे जो उनको पढ़ाया करते थे, संस्कृत श्लोक वगैरह उन्हीं से उन्होंने ज्ञान लिया था। और आज उन्हीं का के लिखी हुई शारदा लिपि पे पूरी किताब चमनलाल रैना जी ने निकाल दी है। ये बहुत बहुत खुशी है कि उन्होंने इतना बड़ा काम आज किया है, और हमारी सारी कम्युनिटी, कश्मीरी नहीं, सब लोग जो भी इसको पढ़ेंगे वो इससे बहुत फायदा लेंगे। धन्यवाद वरुणा जी। Thank you, Sudhir ji. Now, I would like to invite Dr. Chandrasekhar ji to speak a few words. He is a cardiology consultation. He has a cardiology consultation practice in Miami, Florida. He has been a founding trustee and chairperson of the South Florida Hindu Temple and founded the Children's Bala Vihar Education Program with over 250 students attending. Dr. Chandrasekhar ji's passion is to increase the universal message of Sanatan Dharma, especially the core value of underlying unity beneath superficial diversity. So now I invite Dr. Chandrasekhar ji to please take over. Dr. Chandrasekhar ji, please unmute yourself. All right. Can you hear me? Yes, now we can. Okay. I want to send my felicitations and greetings to all of you there, namaskar, and also to our entire Kashmiri community. This special and auspicious occasion is being made even more auspicious with this auspicious ceremony of releasing the sacred book. I will call it sacred because, as Dr. Sopory mentioned, that it has been preserved and passed on with great reverence, and now will be available to the rest of the world in its translated form. So it's a very, very special day, special occasion. I feel honored here to be in the company of distinguished people like Sudhir Sopory ji. He is a preeminent scientist, internationally renowned, and is doing amazing work and contribution to bring back our Sharada language, which is our great heritage. And of course, I'm especially honored to be given this opportunity to talk about this book released by Dr. Naina, the Shakti Upasana and Devi Stuti. Much has been said about Dr. Naina,
He has now authored over 40 books, is working tirelessly to revive our ancient culture, heritage, which could easily be forgotten. In this particular instance, it's even more significant because original manuscript is in Sharada. And I think there are very few people left in our community who have mastered so many languages. Dr. Raina is able to read, decipher, and understand Sharada language, but is also equally well qualified in Hindi, Urdu, and English, having his masters in those languages. So he's a unique individual who would have been able to do this kind of work. And I don't think there are many other people at this time who could really do justice to our ancient Sharada scriptures. So God bless him with long life, health, and he continued to give contributions to our community. This particular work is really interesting and intriguing in a way that it remained after initially having, written by Rajanak Maheshwar Razdan, then passed on to Ishwar Sarup, Krishnaju, and then Devi Prabhaji, and as was mentioned by Dr. Sopory, on a casual conversation mentioned to Dr. Raina, and then in a very short time, he was able to bring it for the rest of the world. Shakti Upasana obviously and clearly emphasizes the Shakti worship, the worship of the Divine Mother, and is deeply rooted in the concept of Kashmir Shaivism. The Kashmir Shaivism is a great contribution to our Sanatana literature, where as much as we recognize that Shiva is the ultimate source of bliss, is really that blissful substrate from which the entire cosmos originates, but at the same time is still blissful and inert. It is the divine expression, the Shakti, which ultimately makes possible the expression of the Shiva's Tattva in the rest of the universe. Although seemingly separate, but there's an underlying unity in them. As much as it will be the goal of each one to ultimately arrive at the blissful state of Shiva consciousness, it won't be possible without the Shakti. The creative force of Shiva Tattva, which is the Shakti, is what manifests as this universe. If there wasn't that Shiva Shakti, there would be no universe. There'll be no one to wanting to arrive to that Shiva Tattva. So the entire universe is because of the Divine Mother, the Shakti component. From Shiva arises the Shakti, and the Shakti manifests as Prakriti, which we see around. And the only way for us who are manifested to get to even to recognize the Shiva Tattva is through the Shakti. That's why the Stuti of Devi, the Divine Mother, is the path for that bliss, path for us to have the ultimate evolution of our own consciousness. And in this particular book, Rajanak Maheshwar Razdan was
blessed with the vision of these 126 names, Namavali, for the Divine Mother. And he penned them down in the Sharada script. Even as Sri Tamalji explains in his book, even the 126th number is not just a coincidence. It does have an underlying spiritual meaning. As Sri Tamalji nicely explains, that the first one is the primal number, representing the Ananda, the bliss, and 2 represents the Icha Shakti, and 6, 2 into 3 being 6. Once you multiply 3, the 3 gunas, the sattva, rajas, and tamas, and that ties it all together. And you add 3, 2, and 1, 6, 2, and 1, it becomes 9, which is the number that, how often you multiply to make the same number. It's a very sacred number in our numerology. So even that isn't just a coincidence. This book not only adds a lot to our literature, but is also path for our spiritual evolution. And spiritual evolution is the reason for our birth. Here I might digress a little bit. Dr. Sopory himself is a scientist with deep interest in spirituality, and I also have science background, being a physician, and also have a lot of interest in spirituality. And I have often wondered, for example, the evolution, the Darwinian concept of evolution has been the struggle, is the survival of the fittest. That is the impetus behind the evolution. Well, at a physical plane, that seems quite obvious, and each species mutates to next level for better chances of survival. If that was the only driving force for evolution, why would we evolve beyond these strong animals like tiger and lion? They can tear me in a few seconds. I'm not any more, I don't have no better chance of survival in those adverse circumstances. Actually, human being physically is a lot weaker than that. So I believe the real thrust behind evolution is not only survival of the fittest in a physical sense, but evolution of consciousness. And each form evolved to sustain higher and higher levels of consciousness till the human level. So really, to me, the real thrust behind evolution is the evolution of consciousness, and evolution of physical forms is only to give the substrate for that evolved consciousness, which resonates with our spirituality. That ultimate purpose of our human life is to attain the highest level of consciousness, where we become one with the Shiva Tattva. And that is the message from Kashmiri Shaivism. And the path to that evolution is through Devi Upasana, through Shakti Upasana. And we now have the great, this Devi Stuti book, which truly, I believe in my mind, that work like that does not happen by logical thinking. This is all intuitive. This is a revelation. It was initially revealed to Raja Maheshwar Razdan, and I believe, as Dr. Sopory said, that Dr. Naina was able to do this in a very short time. That is because this translation, when I looked at it, is also an intuitively done thing. Very beautifully, every name has been explained to bring Divine Mother alive. So we are blessed to have Dr. Naina, and are blessed to have this book given to us, and should further help the cause of reviving, regenerating, and perpetuating our noble culture and our noble traditions. I pray that Divine Mother, with her compassion, with her grace, will bless Dr. Naina, bless everyone here, and bless our community, and continue to keep our tradition and our culture alive. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Chandrasekhar ji.
We were also expecting to have Mr. Mittal ji today with us from DK Print World, the publisher of the book Shakti Upasana. But for some reasons, I don't see him here with us today. So moving further, now I would like to invite our next speaker, our guest of honor, Dr. Beena Agarwal ji. She's a gold medalist in BA Honours and MA exam in 1981, and she retired as a dean at the University of Rajasthan. Presently working as senior fellow ICSSR New Delhi on Kashmiri Bhakti Sahitya evam Samkaleen Sahityak Sandarbh. She is the recipient of Bharati Mishra Prize from Rajasthan Sanskrit Academy in 1997, Agrajyoti Award from Agrajyoti Foundation for special contribution in the field of education, 2005. She has been awarded by Kalidas Sanskrit Academy, Kanpur by Sanskrit Vachaspati Award in 2012. Sanskrit Vidyat Samman Award in 2015, which was given by Directorate of Sanskrit Government of Rajasthan, Jaipur. She had been selected for Sanskrit Chair by Indian Council for Cultural Research, Government of India in 2009. She had been a member of selection committee at Jawaharlal Nehru University, Delhi in the session of 2014. Now I invite Dr. Beena Agarwal ji. Please take over. I cannot. Am I audible? Yes, ma'am, you are. Yes, ma'am, we can hear you. Okay, thank you. सभी को नमस्कार। और आज हम एक बहुत शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। गौरी तृतीया का जैसे बताया, वह विद्या से संबंधित अवसर है, विद्यादान का, स्नातक दीक्षांत का। तो और विद्या के रूप में आप डॉक्टर चमल लाल रैना जी ने शक्ति उपासना जो पुस्तक प्रस्तुत की है, वह हमारे लिए एक बहुत ही शुभ अवसर है। और विशेष रूप से ये जो नाम ग्रहण की परंपरा है, जैसा कि अभी चंद्रशेखर जी ने कहा कि हमारे जीवन का लक्ष्य यह है कि हम चरम को प्राप्त कर सके, चैतन्य, परम चैतन्य जो है उस तक हमारी पहुंच हो सके। और हमारा जो सामान्य जन है वह परम शिव का साक्षात्कार करने में, और वह भी अगर निराकार रूप लिया जाए तो हम संभव नहीं है, सामान्य जन नहीं समझ सकता। तो निराकार रूप को साकार जब रूप दिया जाता है, साकार में भी नाम, रूप, गुण आदि से संबंधित करके हम उसे जोड़ पाते हैं, तो हम प्रायः सामान्य जन जो है, जो लोग हैं, वह उसको ज्यादा अच्छे से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं। ये हमारी नाम ग्रहण की परंपरा बहुत पुरानी है। पुराणों में नाम मिलते हैं, देवी के सहस्त्र नाम मिलते हैं, दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा के नाम मिलते हैं, शिव के सहस्त्र नाम है, राम के हैं, विष्णु के हैं। सबके जो नामावली है, ये नामावली हमें उस ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए साधन देती है, हम उससे जुड़ पाते हैं। और वो जो कर्म कांड, उपासना आदि में भी हम जो कर्म कांड कर पाते हैं, उनके देवी का अगर हमें 108 पुष्प पत्र चढ़ाने हैं तो हम 108 नाम लेते जाएंगे और वहां पत्र और पुष्प चढ़ाते जाएंगे। इससे हमारा ध्यान निरंतर देवी के उन साकार स्वरूपों को भी हम साक्षात्कार करते रहेंगे, मन ही मन उनका साक्षात्कार कर रहे हैं। तो नाम ग्रहण के बहुत सारे प्रयोजन नामावलियों के ये थे कि एक, हम उनका गुणानुकीर्तन कर सकें, उनके स्वरूप के विशिष्ट पक्षों को, जैसे देवी है, अभयदा है, वरदा है, और बहुत सारे जो उनके पक्ष हो सकते हैं, दुष्ट दलन करता है, करती है, इस तरह के जो अनेकों पक्ष, सहस्त्र नाम जब होते हैं, उसमें रचनाकर्ता अपनी अलंकार प्रियता को भी दिखाता है। अ से लिए गए नाम, फिर वर्णानुक्रम से लिए गए नाम भी होते हैं। तो इस तरह की जो नामावली है वह उपासना की दृष्टि से और
इनिशिएट करने के बाद होता है, तो इस तरह का जो वर्णन है वह साधक की श्रद्धा को जागृत करता है, और श्रद्धा को जागृत करने के साथ साथ उसमें फिर निरंतरता जो बनी रहती है नामानुकीर्तन के कारण, उस निरंतरता से धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाता हुआ वह शक्ति सामरस्य की ओर बढ़ सकता है, धीरे धीरे साकार से निराकार की ओर बढ़ सकता है। लेकिन साकार की आराधना बहुत आसान है, संभव है, इसलिए हम जो कहते हैं। और दूसरी बात, जो नवधा भक्ति है इसमें भी श्रवण, अनुकीर्तन आदि जो हैं वह बहुत सरल हैं भक्त के लिए, और आसानी से उसमें पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें जैसे मंत्र साधना है वो बहुत गोपनीय है, और मंत्रों को सामान्य जन ग्रहण भी नहीं कर सकता। तो जब ये नाम कीर्तन है, यह भी गुरु जब उसको अच्छे से प्रदान करता है और साधक अपनी चेतना से उसे संयुक्त करता है, निरंतर श्रद्धा भक्ति विश्वास पूर्वक उसका उच्चारण करता है, तो वह भी धीरे धीरे मंत्र के समान ही सिद्ध होकर फलदायी हो जाता है। तो इस दृष्टि से नाम साधना की जो परंपरा है वह बहुत विस्तृत है, बहुत पुरानी है। तंत्रालोक में भी कहा है, जैसे भैरव, चिद भैरवी की यह जो शक्ति उस उपासना है, तो भैरव जो है विश्वम बिभर्ति पूर्ण धारण योगेन तेन च भ्रियते सविमर्श दया स्वरूप तश्च संसार भीरुहित कृच्च। जो विश्व को धारण करने के कारण, उसको बनाने के कारण भरण करता है विमर्श पूर्वक अपनी शक्ति के साथ, वह भैरव है। तस्य शक्तयः एवेतास्तिस्रो भान्ति पराधिका सृष्टौ स्थितौ लये तुर्ये तेनेता द्वादश उदिता। उनकी शक्तियां हैं, तीन तरह की शक्तियां हैं, परा, अपरा और परापरा, और वे फिर पुनः 4 से गुणा होती है, सृष्टि, स्थिति, लय और तुर्य स्थिति से। तो इस तरह से 12 हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, साधक के लिए स्वतंत्रता है कि वो किसी भी रूप में उन शक्तियों का स्मरण कर सकता है। येन येन रूपेण साधक संस्मरेत सदा तस्य तन्मयताम याति चिंतामणिरेश्वर। साधक जिस भी रूप में शक्ति को स्मरण करता है, बस उसके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास, अटल विश्वास होना चाहिए, तो तस्य तन्मयताम याति, वह उसी रूप को प्राप्त कर लेता, तन्मय स्थिति को प्राप्त कर लेता है, और फिर वह चिंतामणि के समान उसे फल प्रदान करने वाली होती है। और नाम के बारे में परवर्ती काल में भी हम देखते हैं, तुलसीदास जी ने भी नाम के बारे में बहुत कहा है। नाम बिना भव कर्म न छूटे, साधु संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। विनय पत्रिका में उन्होंने कहा है, सूरदास जी ने कहा है, नाम प्रतीति भई जा जन की, लय आनंद दुख दूर हृयो, सूरदास धन धन के वे प्राणी, जो हरि को व्रत ले निश्चय। तो कुल मिलाकर समझ में आने वाली हमें जो विशेष रूप से मैं नाम ग्रहण की बात इसलिए भी कर रही हूँ कि हम नाम के द्वारा, नाम ग्रहण के द्वारा उस परम तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारे में कोई भी क्षमता नहीं है, अधिकारी की हमारे यहाँ बात की जाती है, अधिकारी के लिए क्षमताओं का होना, पूर्व ज्ञान का होना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ सिर्फ यह है कि आपकी इच्छा हो, आप तैयार हो नाम ग्रहण के लिए, तो उसके आधार पर आप के लिए इतनी सहस्र नामावलियां, अष्टोत्तर शत नामावलियां हैं। जिस भी अभीष्ट देवता को आप चाहते हैं, आपके मन में है, उसके बारे में आप इन नाम ग्रहण के द्वारा उनकी उपासना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनके कर्मकांड कर सकते हैं। और कश्मीर की जो विस्तृत परंपरा है, कश्मीर शारदा देश है, शारदा लिपि है और शारदा देवी वहां की अधिष्ठात्री है। तो शारदा लिपि में जो महेश्वर राजदान ने
नाम 126 नाम शारदा देवी के शक्ति के लिए थे, और वो एक एक नाम अपने आप में एक एक मंत्र के समान है। और उन मंत्रों की व्याख्या जो रैना जी ने की है, इतनी विस्तृत, इतनी सरल व्याख्या है, लेकिन सरल होने के साथ साथ बहुत सारे उद्धरणों से परिपूर्ण है, बहुत संपन्न व्याख्या है, और बहुत परिश्रम पूर्वक इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों के उद्धरण दिए हैं एक एक नाम के स्पष्टीकरण के लिए। ललिता सहस्त्रनाम, भवानी सहस्त्रनाम, देवी भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती, वरिवस्या रहस्य, श्री विद्या सारणा सरणी, ऋग्वेद के रात्रि सूक्त है, वागाभ्रणी और अन्य सूक्त हैं, विश्वसार तंत्र है, दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम है, कुब्जिका तंत्र है, हठ योग प्रदीपिका है, बहुरूप गर्भ आदि अनेक स्तोत्र हैं, और आचार्य शंकर की जो दक्षिणामूर्तियां स्तोत्र आदि जो अन्य रचनाएं हैं, उन सब के आपने जो महेश्वर जी राजदान ने जो देवी के नाम लिए हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए, उन नामों को, एक एक नाम को स्पष्ट करने के लिए अपनी हिंदी व्याख्या के साथ उनसे संबद्ध उद्धरण प्रस्तुत किए हैं, जिससे यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, बहुत मतलब संग्रहणीय हो गई है, अध्ययन पठन पाठन उपासना के लिए बहुत ही उपयोगी हो गई है। और आपका स्वयं का तो काम भी अरविंद और इकबाल के दर्शन पर है। तो जो कश्मीर की एक परंपरा है, कश्मीरियत की परंपरा, जिसमें हिंदू मुस्लिम का समन्वित रूप से सारे प्रोग्राम जो त्योहार मनाते हैं, उसमें कहीं वो अपने दर्शन अलग मानते हैं, धर्म अलग मानते हैं, लेकिन फिर भी कश्मीरियत उनमें जिंदा है। कश्मीरियत इसे ही कहा गया है कि वे एक दूसरे के साथ सारे अपने त्योहार साझा करते हैं, अपनी संस्कृति साझा करते हैं, और उसी का उदाहरण आपके दर्शन में भी है। तो इस तरह से जो ये दर्शन है, कश्मीर दर्शन है, कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के त्योहार हैं, कश्मीर के ग्रंथ हैं, ये सब अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है। और ये इस संस्कृति को बनाए रखने का प्रयत्न जो रैना जी कर रहे हैं, जो अन्यत्र जो कश्मीर ये शारदा टीम कर रही है, और जो कश्मीरी भाई कर रहे हैं जो कश्मीर में है या कश्मीर से बाहर है, वो बहुत आवश्यक और बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये बहुत समृद्ध संस्कृति है, और जीवन के लिए भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम उपासना के द्वारा अपने चरित्र को भी सुदृढ़ बना सकें, और इस जीवन को भी बहुत अच्छा बनाएं। और अगर कोई, जैसे कि हम मानते हैं कि चैतन्य से पूर्ण चैतन्य को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, या शिव साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार करना, जो चैतन्य हमारे भीतर है वही समस्त जीव जगत और जंतु जगत के भीतर है। इस चैतन्य का साक्षात्कार हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इस दिशा में भी ये जो हमारी श्रद्धा भक्ति विश्वास पूर्वक जो ये ग्रंथ है, नामावलियां हैं, ये हमें सहायक हो सकती हैं। जब वे नामावलियां, उन्हें हम लोक से जोड़ते हैं कि देवी इस प्रकार की है, इस स्वरूप की है, और यह स्वरूप जो है वही वागीश्वरी है, और इसी तरह के जो अन्य रूप हैं उनके, उन सब रूपों से जब हम अपने आप को जोड़ सकते हैं, तो हम उसके अलौकिक स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, जो इस लोक से परे है। और उस का भी कहीं कुछ अनुमान लगाने में, साक्षात्कार तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम उस दिशा को ध्रुव तारे की तरह से कहीं कुछ समझ सकते हैं। तो इस तरह से यह जो कार्य डॉक्टर रैना ने किया है, और इतने परिश्रम पूर्वक किया है, इतना महत्वपूर्ण कार्य है, और उस महत्व को इन्होंने और बढ़ाया है, जिस तरह से अनेकों ग्रंथों के उद्धरण दिए हैं। तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस कश्मीर शैव दर्शन भक्ति उपासना के ग्रंथों में। यह एक महत्वपूर्ण और संग्रहणीय ग्रंथ है। इसके लिए रैना जी को बहुत बहुत बधाई, बल्कि हम सभी को बधाई कि उनके परिश्रम से हमें इतना सुंदर ग्रंथ मिला है। और
भविष्य में भी हम आशा करते हैं कि इसी तरह का कार्य, वो इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना रहे हैं, और पहले के भी इनके इतने सारे ग्रंथ हैं, तो हमें उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि हम भी निरंतर इस तरह से कार्य करके अच्छा कुछ प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए सब मैं आपको बहुत साधुवाद देती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, और आशा करती हूँ कि हम आपसे प्रेरणा लेके कुछ कर सकेंगे। और वाकई इससे, इस पुस्तक से, शक्ति उपासना की दृष्टि से हम सभी बहुत समृद्ध हुए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, और मुझे अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Beena Agarwal ji. Now I invite the author of the book, Dr. Chamanlal Raina ji. Dr. Raina is an author and a researcher in the Vedas and Agamas of Kashmir. He writes in English, Hindi, Sanskrit, Kashmiri, and Urdu. His research methodology course was on Ma Laleshwari, and his doctoral research was on Sri Aurobindo's philosophy of internal yoga. Apart from this, his postdoctoral research is purely focused on Kashmir Shaivism and the applied Shakti Tattva within the Agamic sources. Now I invite Dr. Raina to please address us. Hello. Yes, Dr. Raina, we can hear you. नमस्कार। आज शुभ वेला है माता शारदा के उस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए, जिस दृश्य ने हमें शारदा सीखने के लिए, शारदा लिपि को सीखने के लिए, शारदा तत्व को सीखने के लिए प्रेरित किया। शारदा लिपि भी है, शारदा स्तोत्र भी है, और शारदा सहस्रनाम है। अतः मैं शारदा देवी को प्रणाम करता हूं, और उसके साथ आदरणीय पद्मश्री सुधीर कुमार सोपरी जी को का अभिनंदन करता हूं। तंत्रालोक की विदुषी प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी, हृदय रोग के बिशप डॉक्टर चंद्रशेखर पंडिता जी, और शारदा टीम के संरक्षक श्री राकेश कौल जी, और उसी टीम की निदेशिका वेरोनिका जी और ज्योति जी, सभी को मेरा सादर अभिनंदन, नमन। सबसे पहले, डू यू लिसन टू मी? Yes, we can hear you. सबसे पहले मैं ईश्वर स्वरूप महाराज जी के अपने चैतन्य मन से आवाहन करता हूं कि उनकी दिव्य दृष्टि पर, जिनकी दिव्य दृष्टि से मैं दिन ब दिन प्रतिक्षण दीप्त होता रहता हूं। परम योगिनी शारदा जी का भी, शारिका जी का भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने मुझे 80 के दशक में शिव सूत्र पढ़ने के लिए दिया था, तथा योगिनी प्रभा जी की दिव्य आभा को नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे पराप्रवेश का पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज की तिथि गौरी तृतीया के पुण्य पर्व से सुरभित है, सुशोभित है। अतः गौरी दशकम के बीच श्लोक से अपने भावों को प्रकट करता हूं। आज के ही दिन आदि शंकराचार्य को कश्मीर के शारदा पीठ से सर्वज्ञ की उपाधि दी गई थी, और उसके पश्चात उन्होंने गौरी दशकम लिखा, और ये गौरी दशकम 10 श्लोकों पर आधारित है,
और इसका मुख्य बीज जो है वो मुख्य बीज इसका है आदि क्षांतम अक्षर मूर्त्या विलसन्तीं भूते भूते भूत कदम्ब प्रस्वेत्रीं शब्द ब्रह्मानंदमीतां तन्मध्यां गौरीम अंबाम अम्बरो अक्षिमामीडे। दिस इज द बीज मंत्र ऑफ these 10 श्लोकास। ये बीज मंत्र है। और आदि क्षांतम अक्षर मूर्त्या, आदि अ से लेके आ तक, दैट मीन्स आदि क्षांतम क्षत्रजन्य आदि क्षांतम अक्षर मूर्त्या, ये अक्षर की मूर्ति है जिसको अंग्रेजी में फोनेमिक बॉडी कहते हैं। इस अक्षर मूर्ति के कारण ही हम शारदा की उपासना में लग सकते हैं। शारदा को जानना है तो हमें अक्षर मूर्ति को जानना है। और शारदा कश्मीर प्रदेश की अधिष्ठात्री देवी है। शब्द ब्रह्मानंदमयीं ताम तन्मध्याम, ये शब्द ब्रह्म जो भी हम कहते हैं, ये शब्द ब्रह्म केवल अ से लेके कुश तक या क्ष जिसे कहते हैं उस तक है। अक्षर मूर्ति, अक्षर मूर्ति ही वर्णात्मिका शक्ति है। और शब्द ब्रह्मानंदमयीताम तन्मध्याम गौरीम अंबाम अम्बरो अक्षीम आमीडे, गौरीम, मैं उस गौरी को जो अम्बा है, जगत जननी है, अम्बा अम्बरहो अक्षीम, उसके नेत्र कैसे हैं? उसके नेत्र अम्बरहो कमल जैसे है। अम्बरहो अक्षीम अहम ईडे, मैं उसे प्रणाम करता। कहने का तात्पर्य है कि जो हम गौरी को पूजते हैं, उसकी उपासना करते हैं और उससे हम अपने आप को तन्मय बना देते हैं। तत्सम, तद्रूप, तन्मय और तद्भव की जो ये प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरकर हम उस शारदा माता के समीप जा सकते। शारदा माता एकैव शक्ति परमेश्वरस्य बिना चतुर्था व्यवहार काले पुरुषेश विष्णु भोगे भवानी, पुरुषेश विष्णु भोगे भवानी समरेच दुर्गा प्रलयेच काली। और इसी प्रलय काल की थोड़ी सी व्याख्या करना चाहता हूं। 1935 ईस्वी में, 1934-35 ईस्वी में कश्मीर भूमंडल में बानमहला स्थान है और वहां पर दिव्य स्वरूप, मैं दिव्य स्वरूप ही कहता हूं, मैं समझता हूं, राजनक महेश्वर राजदान जी ने यामी शक्ति को आवाहन किया। अब यामी शक्ति जब हम ये कहते हैं, वो इसको जब हम पढ़ते हैं, रिसर्च का शोध करते हैं, तो यामी शक्ति ही वास्तव में चिन्मयी भैरवी है। दिस इज द चिन्मयी भैरवी एग्जैक्टली। ये वही चिन्मयी भैरवी है जो यामी शक्ति है। और यामी का संबंध जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो इसका वास्तविक संबंध योग निद्रा से है। इट इज एकिन टू द योग निद्रा। और उस योग निद्रा में ब्रह्मा जी के द्वारा जो शब्द प्रस्फुटित हुए, वही उल्लास भी है और वही विलास भी है और वही शब्द विन्यास भी है। जहां पर वो कहते हैं तुम स्वाहा तुम सदा तुम सुधा तुम अक्षरे नित्य त्रिदा मात्रात्मका थिता अर्धमात्र चिता नित्या यानुचार्या विशेषता तुम संध्या सावित्री तुम देवी जननी परा। और ये कहकर वो कहते तुम है, देवताओं के प्रति जो हम आवाहन करते हैं वो भी है सदा, जो हमसे पहले भी गए हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी से पहले भी कई ब्रह्मा जी हो गए थे। और ये वैष्णवी शक्ति जो प्रक्रिया बनी हुई थी उस शक्ति की, वो सदा आविर्भाव में आती है। और उस आविर्भाव के कारण जो भी शब्द विनिमय होता है, जो भी शब्द निकलते हैं, प्रस्फुटित होते हैं और वही प्रफुल्लित होते हैं, उनमें वही वशटकार ओम है। यही त्रिगुणात्मिका शक्ति भी है। इसी से व्याकृतियां, 3 व्याहृतियां भू भुव स्वा का निरूपण होता है। अब क्योंकि महेश्वर जी राजदान
की मनस्थिति क्या थी, चैत्य अवस्था क्या थी, वो हम कह नहीं सकते, हम उसको बांप नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यामी शक्ति को प्रेरित किया था। यामी शक्ति इज रिलेटेड टू यम, द लॉर्ड ऑफ डेथ। ये जो यामी शक्ति है ये यम से ही संबंधित है, और इस यामी शक्ति को उन्होंने साक्षात्कार किया। दो ही चीजें हैं हमारे पास, एक तो है सावित्री और सत्यवान की बात आती है, और दूसरी बात जो है वो इस तरह से स्पष्ट होती है कि महेश्वर जो राजदान जी यामी शक्ति के ही उपासक थे, और उन्होंने सभी ग्रंथों का मंथन करके उनमें से 100। अभिनव जी, सब कुछ ठीक है, आप अपना हाथ बीच में नहीं लाए, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा है। और इस तरह से वहां पर 126 जो नंबर है जिसको उन्होंने अनुग्रहित किया, पकड़ लिया। इस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने उमा शब्द का प्रयोग किया। अब इस उमा से लेके माहेश्वरी, काली, गिरिजा, शांभवी, शांभरी, शिवा, पार्वती, चंडिका, गौरी, जगन्माता, शिवप्रिया, चंद्रचूड़ा, त्रिनयना, शारदा, सिंहवाहना, सती, दाक्षायणी, आर्या, मृडानी, गजस्य जननी, रौद्री, लोकपूजा, वरप्रदा, रौद्राणी, भैरवी, दुर्गा, भवानी, भवमोचनी, कात्यायनी, भद्रकाली, शर्वाणी, शर्मदायिनी, स्कंद माता, हेमवती, वरा, महिषमर्दिनी, कामेश्वर प्रिया, सौम्या, महात्रिपुर सुंदरी, तुरिया और तुरियातीत रूपा। ये जो है, दिस इज वन सेगमेंट ऑफ दिस होल डिवाइन डेक्लेरेशन। इसमें क्या है, ये इसको शास्त्र की भाषा से, आगम की भाषा से हम आदिकूट कहते हैं। जब हम शक्ति की उपासना करते हैं तो उसमें 3 कूट होते हैं। कूट मीनिंग द कोडिफाइड सेक्शन। कूट में इसमें आदिकूट, मध्यकूट और शक्तिकूट है। तो इसी आदिकूट को उन्होंने उससे उमा से सिंचित किया, उसमें उन्होंने अपने आप को समाया उमा में, यानी वो उमा में ही वो रहना चाहते थे, जो उमा का जो चैतन्य स्वरूप है। और वो चैतन्य स्वरूप है उमा का कि मैं किस प्रकार से शिव के साथ साजिश करूं। और कारण तो ये कि तारकासुर को अंत करने के लिए कुमार कार्तिकेय को पैदा होना था। और वहां पर भी है कि एक यामी शक्ति को अपने आप में संजोए रखने के लिए उमा ने जो तपस्या की, उस तपस्या को ही महेश्वर राजदान ने उन्हें अपने इस गौरवमयी ग्रंथ को प्रस्तुत किया। एक स्तंभन हुआ, उसमें से एक ऐसी चेतना जागृत हुई, वही चेतना जागृति, उसी का नाम चैत्यावस्था, श्री अरविंद की भाषा में चैत्यावस्था और कश्मीर शैव दर्शन की दृष्टि से प्रतिज्ञा कहते हैं। यानी उन्होंने अपने आप को उमा के साथ सायुज करना चाहा। और इस तरह से 42 नेम जो इसमें है, जिसको उन्होंने आदिकूट की दृष्टि से संजोए रखा। और ये भक्ति प्रदान है। और जिसको दूसरी दृष्टि से यदि देखा, शास्त्रीय दृष्टि से या तांत्रिक दृष्टि से देखा जाए, तो ये मानवोग कहलाता है। तो 3 योग होते हैं। अवग, ये अवगव है, मानव प्लस अवग, मानवोग। और इस तरह से मानवोग, दिव्य योग और सिद्धोग, ये 3 योग है। तो उनके समझने का तात्पर्य यही था कि हमें त्रिपुराक सिद्धांत को अपनाना है, और उसी त्रिपुरा सिद्धांत में सृष्टि, स्थिति तथा उसके साथ लय है।
हम संहार नहीं मानते हैं, बल्कि हम लाए। पेज नीचे रखें थोड़ा सा। तो उस लाई को हम अपने आप में संजोए रखते हैं। इसी कारण से आराधना परमा आराध्या परमा शक्ति यथा सर्वमिदं ततम, ये महावाक्य आगम शास्त्र पर आधारित अभेद भूमिका की ओर संकेत करता है। आद्या शक्ति विश्वस्य बीजम सैव सा अस्ति के अनुसार पराम्बिका जिन समयों में जिन रूप में अवस्थित होती है, कृततत्व अथवा पराम्बिका शिव तत्व का ही प्रारूप है। कहा गया है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ मन तथा वाणी पहुंच नहीं पाती है वही अचिंत्य रूपा भवानी है। कश्मीर की पुण्य भूमि में शिव तथा शक्ति का संगम सर्वत्र दिखाई देता है। शक्ति स्थलों से हमारा संबंध इष्ट देवी का ही है। व्यापक रूप से इष्ट देवी श्री रागिनी भगवती, श्री शारिका देवी, श्री ज्वाला, श्री भद्रकाली, श्री महाकाली, श्री शिवा, श्री त्रिपुर सुंदरी के रूपों से पूजी जाती है। इष्ट शब्द इष्ट पुलस्कृत से बनता है। ये शब्द अदीष्ट फल प्रदा, सर्व सौख्य प्रदा, त्रिकोणस्था, त्रिपदा तथा ओम भुवा साह व्याहृत्यों से पूजित है। इष्ट देवी कुल देवी है जो गोत्रों पर आधारित है। ये श्रेणी में भी ज्वाला भगवती कश्मीरी पंडित समुदाय में एक विशेष महत्व रखती है। इस देवी का प्राकट्य अथवा प्रादुर्भाव आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को हुआ है, जबकि माता शारदा का आज की पुण्य तिथि पे हुआ है। और हम मानते हैं कि नवमी तिथि को, आषाढ़ की नवमी तिथि को माता शारिका प्रस्फुटित हुई है, उनका प्रकाश हुआ है। और अष्टमी के दिन हम अपने आप को भवानी देवी रागिनी के चलकुंड में अपने आप को भावना से ओतप्रोत होकर वहां पर पुष्पांजलि देते हैं। उसी देवी का प्राकट्य अथवा प्रादुर्भाव कितना सहज बनता है। श्री देवी पुराण के अनुसार दक्ष पुत्री दाक्षायणी ने दक्ष के यज्ञ में शिव के प्रति कोई निवेदन न पाकर इसे महान अपराध माना, तो वो स्वयं अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर में आयोजित यज्ञ में अपने पिता से समझाने लगी कि शिव तत्व क्या है, सृष्टि निर्माण में महादेव शिव के गौर अघोर रूप का वास्तविक कारण क्या है। वैदिक श्रुति के अनुसार तुम अग्नि रुद्रो का अभिप्राय समझाती हुई दक्ष प्रजापति के अहंकार को नष्ट करने के हेतु पराम्बिका योगाग्नि में प्रविष्ट हुई। यही इसी योगाग्नि की रचना, इसी योगाग्नि को समझ लिया था महेश्वर राजदान जी ने और उसको यामी शक्ति से संबोधित किया। और यामी शक्ति का अर्थ ही है कि मैं अब अपने ये शरीर को छोड़ना चाहता और मुझे साक्षात्कार हुआ। तो साक्षात्कार होने के पश्चात अब कोई अर्थ ही नहीं निकलता है कि मैं अपने आप को जीवित रखूं। जीना और मरना क्या है, ये कुछ नहीं है, ये काल क्रम चक्र सिद्धांत के अनुरूप चलता है। इसीलिए उन्होंने वास्तव में उमा से लेकर पूर्णेश्वरी तक का जो सफर किया, उमा बेसिस है, वो उमा शैलपुत्री है और पूर्णेश्वरी सिद्धदात्री है। जब हम दुर्गा सप्तशती पर देखते हैं तो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रकंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, गौरी चाष्टम, नवम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। और ये सिद्धदात्री जो है वही पूर्ण परफेक्शन है और इसी को सिद्ध योग भी कहते हैं। और शैव दृष्टि से, कश्मीर की दृष्टि से इसको हम प्रतिविद्या शास्त्र भी कहते हैं। Anything when we can realize ourselves, when you see any we understand the beauty of this whole cosmic
फिनोमिनन। अब इस पुस्तक के बारे में ये मेरे पास कैसे पहुंची? पुस्तक संभवतः जहां तक मेरी याददाश्त का ताल्लुक है, 1.5 से ज्यादा ये हो गया कि मेरी किताब, एक पुस्तक चल रही थी कादी विद्या पर। तो परम पूजनीय आदरणीय सुधीर कुमार जी ने कहते कहते ऐसे बात में एट रैंडम बोल दिया कि हमारे पास 126 नामों की या 125 नामों का एक ग्रंथ है जो रहस्यमय ग्रंथ है। तो मैंने सहसा उन्हें बोल दिया दैट if you allow me, I will just have a look at it and I will work on it. तो उन्होंने कहा हाँ, हो गया। और इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से मुझे फोटोस्टैट दे दिया। तो उस फोटोस्टैट जब मैंने देख लिया तो वहां पर प्रोफेसर पुष्प जी ने वहां पर ईयर मार्क किए थे, नंबर डाले थे फ्रॉम 1 to 125 और 126 डाले थे। तो मैंने कहा ये पूर्ण रूप से अच्छी तरह से होना चाहिए। देन आई रिक्वेस्टेड राकेश कोल जी, आप शारदा टीम प्लीज हैव ए लुक एट इट। और आप जानते हैं यू नो हाउ टू डील विद दीस मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो आप इसको, ये जो मार्क्स है ये मार्क्स नहीं होने चाहिए। इस तरह से जब उन्होंने किया तो मैंने इसको स्टडी किया और ये पूरी तरह से ठीक हो गए। इससे पहले 1935 में ये महेश्वर राजदान ने लिखे थे और उसके पश्चात उन्होंने इसमें लिखा था कि फला ऑन ए स्पेसिफिक तिथि he has to leave this earthbound consciousness। ये एक महान योगी ही कह सकता है कि किस समय, किस तिथि पर, किस नक्षत्र पर, कितने बजे मुझे इस देह को त्याग करना है। तो उन शब्दों को मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। नमो परिमित कृतवो अनंत कृतवो नमो नमः, नमो 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 भूया पूर्व भूयो नमो नमः, प्रसीद मम विश्वेश गंगाधर महेश्वर, नमः सकल कल्याण दायिने शूलपाने। और आयुर अंत्यदिनीये देवीर में भी नाम भैरवो जता तुष्टो पर्या भक्त्या राजा नक महेश्वरा, निधनात् पूर्वम यामिनाम देवी दर्शनम हर्षता, आगमनाम जहो प्राणान प्रथमे प्रहरे क्षणात्, शिव उदयम प्रथा लोक प्रद्योजित दिगंबरा, कृष्ण अष्टम्याम श्रावणस्य शिव सायुज्या सतत। तो इस तरह से कृष्ण पक्ष, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को उन्होंने शिव सायुज्य प्राप्त किया। और वो कहते हैं इसमें कि मैंने यामिनी देवी के दर्शन किए और यामिनी देवी के दर्शन करने के साथ मैं हर्ष किया, हर्ष था, मैं हर्ष हो गया, मुझे प्रसन्नता हो गई। वो मुझे काल रात्रि नहीं दिखाई गई, वो प्रलयंकरी देवी नहीं थी, न वो रुद्राणी थी, बल्कि वो श्रेयस गई थी और जो सत्यम और ऋतम पर आधारित थी। इस प्रकार से 1935 में उन्होंने लिखा था एंड आई वाज बोर्न इन 1940। तो उसके बाद ये मुझे 2022 में मिल गए। तो इस तरह से इतने अंतराल के बाद मैं अपने आप को हर्ष महसूस करता हूँ कि इस काम को, इसको समझने के लिए, इन शब्दों को आत्मसात करने के लिए मेरा कुछ कह नहीं सकता हूँ। How it happened, which is perhaps a divine providence. Perhaps I should say this is the divine providence। और उसी divine providence के बाद ये मुझे मिले। यदि सोपोरी जी नहीं कहते और मैं नहीं सुनता और फिर वो अपनी कंसेंट नहीं देते तो किस तरह से होता है। अब ये किन किन हाथों से गया है। जैसे मैंने आदरणीय मीना जी को कहा था तो अब उन्होंने कहा कि रैना जी खुद बोलेंगे। सबसे पहले ये ईश्वर स्वरूप स्वामी जी को प्राप्त है। जब वो महेश्वर राजनक महेश्वर जी का निधन हो गया तो उनका स्नान क्रिया जब हो गई थी तो उनके जेब में से ये पत्र निकले। जैसे कि उन्होंने कहा है, ये 4 पेज
फुल टोटल है। और उसमें उन्होंने फिर अपने पास रखा, संजोए रखा, जैसे as has been told by Sudhir Sopory जी कि ये रक्षक है, जैसे रश, it is रक्षक है, ये कवच है। वास्तव में ये जो शब्द है ये कवच है। ये इस कवच को के रूप में उन्होंने अपने पास रखा। और कवच के बाद फिर ये शारिका जी के पास आए। शारिका जी के बाद फिर आदरणीय सुश्री प्रभा जी के पास आए। प्रभा जी के पश्चात प्रभा जी ने जब ये किया तो प्रोफेसर कुशुप जी ने इसको रूपांतरित किया था देवनागरी लिपि में। फिर ये फिर से इनके पास रह गया और प्रभा जी के कहने पर आदरणीय मीना जी ने फिर उसको हिंदी में लिख दिया। वहां पर लिखने के पश्चात फिर उस पर एक नोट भी लिखा है और उस नोट को भी उन्होंने मेरे पास भेज दिया, जिसको मैंने सर स्वीकार किया, क्योंकि ये एक दिव्य रहस्य है। और दिव्य रहस्य को हमारे शास्त्रों में, विशेषकर तंत्र शास्त्र में, हृदय कहते हैं। It is the secret, quintessence, अंग्रेजी में कहते हैं, it is the quintessence of the tantras, and that tantras are associated with mantra and yantra. यदि आप आ जाते तो मैं थोड़ा सा जो हिंदी नहीं समझते हैं तो मैं उनके लिए थोड़ा सा जो कुछ मैंने इस पर लिखा है वो मैं लिखूंगा। It is the Vidya aspect of the Divine Mother that unveils the true nature of Raja Maheshwar Razdan, who is all witness to its manifestation in 120 sacred names. It is all based on the Shakti Tattva, focusing on Shiva through Chitta Bhairavi and appearing as Yamini. The emphasis is on the word Yamini and Chitta Bhairavi here. Shakti says, I alone existed before the creation took place. I am in no way different from the absolute truth, that is Shiva Tattva, which is the Brahman of the Upanishads and Jagannatha of the Puranas. Equally, the Divine Mother is Ichha Bhairavi. It is a Chitta Bhairavi, who is revered as the Uma. She is adored as Mahamaya, who is inexpressible and cannot be defined through words. Chinmayi Bhairavi is undifferentiated from Parabhairava, as said by Ishwar Swarup Swami Lakshmanju Maharaj while giving lectures about the Shivastotravali. The followers of the Trika Shaivism call it as Vimarsha Shakti or Vimarshani Shakti. This world happens to be the resultant force of the Chit Shakti, Ya Devi Sarvabhuteshu Chetnetya Vidiyate, Namastasya, 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 Namo Nama. This Chetna is Chit Shakti, it is Chiti, it is Chitakala, it is Chitagnikunda Swarupa, it is Chit Ekaras Rupini, it is Chintamani, and it is Chinmayi, Chetna Rupa, and Chaitanya Mukusuma Priya. These are the various facets of Chit Shakti. Here the Rishi makes emphasis on the word Chetna, which is consciousness, but consciousness is always in Chit Shakti, known as the divine intelligence. Then the question arises as how can it be that this universe of ours is not real? Apparently the change that we undergo is but the divine capsule of time within space, seen as the Kali or Yami aspect, which is the merger with the source energy of the Chitta Bhairavi. Durga Saptashti says, Chitrupena Kratasnam Etat Vyapista Jagat Namastasya, 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 Namo Nama. The whole universe is but the appearance through the manifestation of Chitti, which is consciousness aspect of the Divine Mother Shakti. The same Chitti is explained as Vimarsha. As Shakti is manifested as Vyapini, which is very much there, who is really adores at Chitta Bhairavi, she is revered as the Yamini. There is no difference between Shiva and Jiva. According to Trika system of philosophy, when this is true, then Jagat is in no way an illusion. It is but the Sankalpa Shakti of the Divine Mother, to manifest in multi forms, having infinite names and epithets. Durga Saptashti confirms this thought in a very lucid manner. Nityasa eva Jagan Mata,
Ya Sarvam Idam Jagat. Divine Mother is Nitya, who is Uma, the first name written by Maheshwar Razdan ji. She's Bhuvaneshwari, the sovereign queen of the three realms of Bhuva and Sa. She is Kevala. The whole universe is but the manifestation of the universal consciousness. How Shakti emerges? How he got this idea? This is the question. The Veda declare that Shakti is the primal energy. When we study the Devi Sukta in the Rig Veda, we learn that Ratri, literally night, is but the manifestation of the divine Shakti as being nothingness. It is Param Shunya Ratri, and that is why he adored it. Razdanji, Maheshwar Razdanji, Rajan Maheshwar Razdanji adored it as Yamini as well as Chitabharvi through the Dwadashpal Shakti. Brahma Mayatmika Ratri Parmesha. Tat Adhishthatri Devi to Bhuvaneshi Parakritika. The Ratri Suktam of the Rig Veda is very the most sublime truth of the eternal light as well, revered as the Prakasha in the Trika way of understanding the nature of Asmi, means I do exist, and Asti just does exist. There should not be difference between Asti and Asmi. Sah Asti, Sa and Visarg Asti, and Sa plus Amatra Asti. There is no difference. That is Shiv Shakti Ek Rupini, which is clear in these 126 names. Chitabharvi is witness of the mind and the central point of Sri Chakreshwara. It evolves and casts itself the unknowable vast. Chitabharvi is the living consciousness. After realizing the Chitabharvi in just 1/26 of eternity with appearances which Yami Raja Maheshwar Razdan put the 5 shlokas in the manner of direct perception, which is Sakshatkara, and a grand preparation for meeting together in the infinity of vastness with Amriteshwari. I have just translated these 5 shlokas in English. The concluding 5 shlokas after 126 epithets are, O Devi Chitabharvi, Namaskar to you, which is my parikrama, that is physical form, in the physical form, but it is limited and measured within the understanding of my limited knowledge. It is all comprehending. For all the tattvas, my namaskar be to you through every sankalpa where there is no vikalpa or any option of going to the realm. Shloka number 2. I see Vishweshwara, who is Gangadhara and Maheshwara. All these 3 epithets of Amriteshwara are related to Vishwa as the universal flux within eternal orientation. Shiva is the revealer of the 1,000 names of Chitabharvi in the expression of Bhavani, the universal mother of existence. O Shiva, you do it through your shula, means spike, in your hand, and showering the boons of Sakal Kalyana, which is the highest bliss and puritude. I am Rajanak Maheshwara, he says. In the 3rd shloka, I am Rajanak Maheshwara and am conscious of the self-awareness and am identifying my self-awareness with Shiva through Devi Yamini, putting it in just 5 attributes of my awareness at the time of merging with the divine being, which is Nidana, a termination from the existing self. Before leaving my present bodily frame, I had the darshan of the Yamini Devi. Just in a moment at the Brahma Muhurta, I got rejoiced and saw myself in ecstasy. I realized that the Digambara state of Shiva, which is Shiva Dvaita or Shiva Daya or Abheda Bhumika or Pratyabhijna, it happened to be the Krishna Paksha of the Shravan month. And through the graceful darshan of Yamini, I became one with Shiva, the Para Bhattarika, Para Bhairava, Parameshwara. Om Shanti. With these words, I pay my obeisance to all of you. Hello. Thank you so much, Dr. Rena. And thank you so much for sharing such deep secrets and knowledge of Shaiva and Shakt philosophy with us. So now we have arrived at the most awaited moment of the program, which is the video release of the Krishna Stuti, which is sung by the eminent Kashmiri singer Naina Saproo Trisal ji.
She is here with us as a guest today, but I think she'll join us back in some time. We have with us the director of the video who who provided his support during the compilation and direction of the video, Professor Virender Rawalji. So this bhajan is basically taken from the 18th century original manuscript, Krishna Stuti, written in Sharada lipi by Sant Vasudev ji. During the transliteration, we found that some of the words used in his writings are no longer used in the spoken Kashmiri. Some errors were found that can be scribble or interpolation errors when these outpourings of saints came from mouth to mouth till someone decided to write it down. Handwritten copies from time to time could have contributed in compromising the original text of the poet. We thank our manuscript team especially, who has done thorough research work during the transliteration of this manuscript. And it was only our team's suggestion to record a few verses of this Leela to be dedicated to Ma Sharda. And it's a big leap in the journey of revival of Sharada Lipi. Now, I would share that video, we'll release that video here in presence of the director Virender Rawalji. I wish Naina Saproo ji could also join us, but she was here a few minutes ago. Maybe she'll join us again later. And then we'll give a few minutes to Virender Rawalji so that we can thank him. So we'll share the video now. कोर शारदा टीम फाउंडेशन विश्वसनीयों का एक समूह है जो वितस्ता की घाटी की पवित्र लिपि शारदा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शारदा सदियों से हमारी लिपि रही है। लेकिन पिछले चंद वर्षों की उपेक्षा के कारण इसे केवल औपचारिक उद्देश्यों के लिए ही उपयोग किया जा रहा था, परंतु हमें दृढ़ विश्वास है कि इस लिपि को अपना गौरव पुनः लौटाने की आवश्यकता है। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए CST फाउंडेशन ने 18वीं शताब्दी की पांडुलिपि का लिप्यंतरण करके शारदा लिपि को पुनर्जीवित किया है। ये एक नया जीवन दान है हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए, और इस कार्य को अपना सहयोग आज हम इस लीला से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भजन मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इस भजन को वासुदेव जी ने लिखा है, जो 18वीं शताब्दी के मध्य के कवि थे। वो माता रूप भवानी के अनन्य भक्त थे। इनकी रचनाओं में भक्ति और ज्ञान का मिश्रण हुआ करता था। भक्ति, ज्ञान, दार्शनिकता के साथ साथ इन्होंने साहित्यिक रचनाएं भी रची हैं।
जाम अतिशुभान सहारों
Second integration. Wow, such a beautiful rendition. And I thank Naina ji for this amazing Leela. And only I think she could have done justice to such difficult composition. And also Professor Virender Raval ji, who provided his support to actually finish up the video. In fact, till last evening, we were just sending the video back to him for few changes, and till the last minute he kept editing the video, and here it is in front of you, the final outcome. Thank you so much, Naina ji and Professor Raval ji. Professor Raval ji, I would request if you could just put your camera on just for a minute so that we all want to thank you. Naina ji is not here yet. No, Naina ji is here. Okay, Naina ji is here. So, Naina ji, I would first request you to please, if you could put your camera on, and if you could just say a few words. Naina ji, can you hear us?
No, she's there. I can see her, but she is not able to. Yeah, she is muted. yes, Hello. Naina ji. Yes, Naina ji, we can hear you. I think something went wrong with my camera. Okay. Can you see me? I can't see you. No, we can hear you, but we cannot see you. Naina ji, you I can don't know what has talk, happened. no Or no, something went wrong. I was just मैंने थोड़ा छेड़ा इसके साथ तो कुछ हो गया. Now, चलिए आप मेरी. Can you start the video now? I have given you the. You start your video. Okay. Yes, Yes, yes. we can Now see you now. we We can see you. अच्छा. नमस्कार आप सबको मेरी ओर से. बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा. मैं बीच बीच में सुन रही थी. लेकिन मेरे यहाँ पे भी थोड़ी कुछ आवाजाही चल रही थी, तो जिस कारण मुझे बीच बीच में छोड़ के जाना पड़ा. मैं सुन रही थी. बहुत हद तक मैंने सुना. सोपोरी साहब को सुना, डॉक्टर साहब को सुना, और रैना साहब को भी थोड़ा बहुत सुना, और आपकी जो गेस्ट ऑफ ऑनर थी उनको भी सुना मैंने. और अभी थोड़ा सा मैंने वीडियो भी देखा. मैं बहुत धनभागी हूँ कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना, और मेरे से जो बन पड़ा छोटी मोटी सेवा मेरी ओर से जैसी भी हो पाई, इसको कंपोज करना, इस गीत को, भजन को. ये लीला नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बहुत पहले से बताना चाहती थी. लीला, इसे लीला नहीं कहा जा सकता. ये भजन है. ये लीला नहीं है. लीला है जिसमें किसी अवतार के, ईश्वर के या किसी के भी कर्तव्यों के बारे में, उनके कृत्यों के बारे में बताया जाए. ये दरअसल भजन है, और इस भजन को मुझे सौभाग्य मिला इसे गाने का, और आप लोगों ने पसंद किया. इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी. बहुत धन्यवादी हूँ आप सबकी. ओवर टू रावल साहब. बाकी काम तो सारा रावल साहब ने किया है. Thank you so much, Naina ji, for being with us today here and for giving your voice to this bhajan. Thank you so much. So great of you too. Professor Saab, if you could put the camera on. नमस्कार. मेरा कैमरा तो ऑन ही है. पता नहीं आप देख पाएंगे मुझे कि नहीं. Am I audible? Yes, you are audible. I can. Yes, we can see you now. Thank you so much. नमस्कार सबको. कोर टीम, जो शारदा टीम है, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने आज एक मौका दिया एक पवित्र काम करने के लिए मेरे द्वारा से. और बहुत सारी चीजें जो इसमें आती हैं, जो डिवाइन फोर्स, जैसे रैना साहब ने भी कहा, डॉक्टर रैना ने भी, ये खुद इंसान खुद नहीं करता, ये हो जाता है. मतलब इट्स जस्ट अ डिवाइन फोर्स व्हिच मेक्स अ पर्सन टू डू. अदरवाइज आप इतनी दूर बैठे हैं, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ नैना जी के द्वारा से मुझे ये फिल्म बनाने का. इसमें हमने जी जान से मेहनत की है, और बहुत सारी कमियां भी रही हैं जो कि हम आने वाले दिनों में शायद हम पूरा कर सकें. और सबसे पहले मैं राकेश जी का और मैडम पीर जो हैं मेरे साथ कांटेक्ट में रही बहुत देर तक मेरे साथ, जैसे उन्होंने कहा एडिटिंग के दौरान, तो उनका भी मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा. और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि डॉक्टर रैना को सुनने का, और बाकी जो प्रोफेसर सोपोरी का सुनने का. तो एक अजीब सा एक माहौल सा बना. पूरा जितना भी समय ये चलता रहा प्रोग्राम, मैं लगातार इसको बिल्कुल देखता रहा और सुनता रहा बहुत अच्छी तरह से. कुछ चीज़ें समझ में आई और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, और उसका ज़रूर मैं अध्ययन करना चाहूँगा. और मेरे में बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों का, स्पिरिचुअल चीज़ों को का अध्ययन करने का. तो इसलिए मैं इसमें बहुत कोशिश करूँगा इसको और भी सुधार करने का. आपका बहुत 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 धन्यवाद. शुक्रिया. सो नाइस ऑफ यू. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब. थैंक यू. Thank you so much. Thank you so much for being with us here today. Thank you. Same here. Now moving on, I would like to invite
Kuldeep Dharji, who is also the editor of our bi-monthly newsletter Matrika. He's here to present the annual issue of Matrika. So I would request Kuldeep ji to please take over. Namaskar and Sadar Pranam to you all. Matrika is 1 year old in its new digital avatar. Along with Sharada Day, we are also celebrating first birthday of Matrika today. We started with a 6-page magazine last year. It has grown in content and volume over the last year. My association with Core Sharada team, initially as a student, provided me with this opportunity to start Matrika in digital format. I'm really grateful to Core Sharada team for that. As I emphasized last year on the same auspicious day, this has been possible mainly because of Satish Sharada font developed by Core Sharada team. My editorial team members, Sunil ji, Parul ji, Veronica ji, have been the cornerstone for the project's success. I am blessed to have continuous support of Shri A.K. Razdan Sahab, Shri Sridhar Alek ji, Shri Ashok Khazanchi ji, Rakesh ji, and Nidhi ji. I have been privileged to get constant encouragement of almost all CST members and their valuable suggestions from time to time. This annual edition is a very special one for me personally, as I had an opportunity to interact with some stalwarts and scholars in their own right. I hope you will like the variety of articles in this annual edition and provide us with your feedback and suggestions. My greetings on Guru Gauri Tritya, as you may like to call it. Greetings and advance for the forthcoming Republic Day. Jai Hind. Let's have a glimpse of the annual edition. Can I share, Veronica ji? Yes, you can, Kuldeep ji. Okay. This is the annual edition of Matrika. I'm thankful to Parul ji for putting up together a special painting for us on this occasion, which I had requested her, because we are about to inaugurate Sharada Yatra temple in Chitwal. So this is a glimpse of that painting, which he has put together after a lot of efforts. Thank you, Parul ji, for that. I will skip my editorial. We have some very good feedback from very, say, absorbing and critical feedback from some of our readers. So that I have also put up in this annual issue. And this is the main story of our Sharada team, how we developed Satish Sharada. It was a creation of Core Sharada team and Vinod Ranjan ji, who is now in Germany. And he did this with the help, in consultation with our own Sunil ji, whom you know, he is the backbone of our all presentations you see in our public domain. So it gives a complete glimpse of how we have developed this keyboard for Sharada. We are thankful to Anupam Kherji for a special message on this occasion of our annual issue, which he was very kind enough to share with us. Thank you, Anupam ji, once again. And I had an opportunity to speak to Sri S.S. Toshkhani ji and requested him for a particular article on this occasion, on a special occasion. He has been very kind enough to give a total glimpse of the Sharada development, how it developed over a period of time, how it came to the present. It's a very beautiful article, and I recommend that every Sharada lover should go through every single word of it.
we have given a Sharada transliteration along with the Devanagari Hindi Rupantar. Again, always supporting us, Dr. Sopory ji, with his very encouraging message on the occasion. Thank you, Dr. Sopory ji, for being so kind, in spite of your having lost a very important person like Parva Devi ji. And our constant support in the whole year. In fact, he is the person who brought me into learning Sharda, that is Sri Razdan Sahab, and he keeps continuously writing about the all sons of Kashmir, and this is from the first edition till now. He has been continuously giving us an article on that. Another message from Basha Sumli ji. Thank you very much for always supporting our cause at Core Sharada Team, whether it is for Matrika or for Sharada promotion. Thank you very much for that. And as a series of Upanishad Shlokas, Isha Upanishad, again by Sri Razdan Sahab, it is a very important element of in the last 7 editions. He has been writing. This is the 6th shloka with his own commentary. My special thanks to Dr. B.K. Cole Dembiji. He was not keeping very good health, but in spite of that, I wanted that he should write something for us, but he was not in a good condition to do that. Still, he was so magnanimous, and he wrote a special message on the occasion for us. Thank you very much, Dembi sir. Dr. Kirtikant Sharma, who is a very eminent person by name itself, has been very kind to us in supporting Sharada, Core Sharada team at various levels in the government and in institutions, etc. And he has also written something about Kashmir Tir Sangrah as a heading. He has written specifically for us in this annual edition. Thank you, Krishna. There is a small some poem by Deepak Sopory ji, so you will like it. And again, always supporting us. Just now we were honored to have him speak to us on his book release. He's written a small article on Gauri Tritya. Dr. Naina Sahab, thank you very much for giving us this message, this small article on Gauri Tritya. Thank you very much, sir. And as a part of spreading Kashmiri culture, we have been carrying out Master Zindakol's poetry and from his book Samran. And this is the next, which is Naat Tayari, and this has come out in this edition. And there is a small report about Shardayata Mandir, which is being now inaugurated. We have the Murti has been already started the journey from Sringeri, and it will reach Titwal in the month on Navareh this year. A small article on that, and these are some glimpses of the temple and Murti, and the Murti on the second right is the actual Murti, which is now started traveling from Sringeri. There's a very beautiful poem by Rajinder Jadji, which I have put up there. A very thought-provoking article by our own Sri PVS Kumar on how to spell. We have got always this, we are in 2 minds whether to write Sharada as Sharada or Sharada, and this has given complete insight into how we spell certain things and how do we transliterate or translate Sanskrit into English. A very nice scholarly article which everybody should read. I am thankful to Dr. Uday Kokruji also, who has written on preservation of Kashmiri and Sharda. I had requested him to write something on this occasion, and also he has been very kind to do that.
As you have just seen the video of one of our these manuscripts, which was transliterated by our team, Krishna Stuti. Over a period of time, we have translated a lot of manuscripts. That work has been done by our team, and the methodology was to make different teams and make them work on those things. I'm grateful to all the people. All the pictures could not be available. Whichever pictures could be available, I have done. The rest of the names are already available on that list, and these are some of the glimpses of the manuscripts that that we have transliterated as a core Sharada team members. Thank you, the team members, for doing a wonderful work. Another article from one of our readers who wanted to know what is lipi and how it has taken birth. Is a research scholar, has written a small article for us. And this is since Dembi Sahab could not write an article for us, I thought on his behalf we'll put up a small article, for one-page article. He has written a book which I will show you later on, because simultaneously I cannot show. Or if you can see me also, it is a book like this. This is the book from which core Sharada team has developed certain slides on how development of particular letters of Sharada alphabet took shape, and these are some of the slides from that. And what are the basis of that is given below, how it has happened. It is taken from his book. Razdan Sahab, apart from his regular articles, has written a very beautiful on Rahasya Upadesh, on one this is on this lecture article with his own meaning on transliteration of the poem. Thank you very much, Vinita Saligramji, for your article on Vidwan Vallabhdev. One more message from our own Kaveri Bamzeji for giving us blessings to core Sharada team and this annual issue of Matrika. We on this request of one of our readers, we have started writing. We have started from this year, this issue, writing words and sort of pictorial edition for children who can read Sharada as well as Kashmiri. So this is in Kashmiri Sharada, and our Satish Sharada keyboard is capable of doing this. So this is on birds, and we'll take it every month forward. This is birds, and these are vegetables. How we call them in Kashmiri. These are the Kashmiri names for all these vegetables. In Hindi, in Devanagari and Sharada. These are certain advertisements who have been with us all the time. We have put up together for this, for children only, this vowels of Kashmiri, Devanagari and Sharada, so that this can be used as a reference by anybody who wants to write in Sharada and in Kashmiri. This is our general slide, which we publish every issue, so that people are acquainted with how Varnamala of Sharada is written, developed by our own Sunilji. A small way forward by Rakeshji on what we have been doing and what we intend to do next year. And a regular feature as Kashmiri song for children. We are honored to have had a recent meeting at IGNCA with KK Sharmaji and our own team members. You can see them. And we had an MOM which can be seen in this. We had how we want to Sharada to be taken by various institutions. That is what we are doing. And this is our regular thing. And you can also reach us on any of these social media. We keep publishing posters on regular occasions. Thank you very much for listening to me patiently on the annual issue. I hope you will like the content and the variety of articles in this. Thank you very much, Veronica. Thank you very much.
I think I would like to say, Kuldeep ji, thank you very much. I know this has been your great effort. If today Matrika is alive, it is all because of your efforts. I know how much it takes to basically get the details from each and every, you call each and every person to ensure that you get all the materials for the Matrika. And I encourage other people also to cooperate. I think send your respective articles, whatever you want to publish, to Kuldeep ji, and we will always love to have that published in the Matrika in our coming editions. But yes, definitely Kuldeep ji has put enormous effort from complete last 1 year. It was when we did not know who can handle Matrika because we are into the trainings and other aspects. And honestly, I was not able to do justice, but when Kuldeep ji has taken over, he has really brought Matrika into a beautiful, beautiful journal for our team. It is a voice of our team. I would appreciate everybody to get a copy of it. This is a special edition this year, Sharada Diwas. And every year on the Sharada Diwas, we will always release the special editions. So I request everybody to please get the copy. We will also send you the free copies of the PDF. I hope, Kuldeep ji, we can send it to everybody, right? Yeah, we can do that. I'll do it probably today, tonight or tomorrow. Yeah, sure. Great. Thank you, Kuldeep ji. Thank you for your nice words. Thank you, Rakesh. Thank you so much, Kuldeep ji. And again, many congratulations. It's all because of you that we have this. We are completing Matrika is completing the first year, completing its first year today. Thank you so much. Thank you so much for your efforts and the other team members as well. Now I invite Nidhi Bhatt ji to throw some light on the achievements and accomplishments of Core Sharada team in the past year. So, Nidhi ji. Namaskar, everyone. I will share the presentation. First of all, yes, if you could share the presentation. I'm facing some technical issue on my end. Thank you, Veronica ji. I would like to wish everyone a very happy Gauri Tritya. And, Kuldeep ji, I would salute to your efforts of taking Matrika to, I think we've all dreamt of, but you've made it possible, of publishing the annual issue. And congratulations everyone from the team for the efforts that go into, writing the articles and supporting him, and everyone's doing their bit of taking Core Sharada team to the heights that we are seeing right now. Well, I would just want to take you through a few achievements and accomplishments through the last year, 2022. Veronica ji, the next slide, please. Thank you. Most of you would know that we have tied up with various colleges, one of them being Indica courses. We completed a basic course with the Indica courses in January 2022, where we had scholars from various fields join us to learn the divine lipi. And it was a very good experience of working with a program like Indica courses. We also, on our level, Core Sharada team concluded 2 basic courses this year in June and January. Although we do intend to increase the traction of holding more basic courses, but last year we did 2. In February 2022, we did an online workshop with the Australian National University, where we had participants from across 7 countries. I would just want to add here that the movement that we are seeing, where we are tying up with international institutes and courses, it really brings our dream to that Sharada Lipi will gain its, lost. I wouldn't say it has lost its, charm, but yes, it will regain more glory, I would say.
After basic courses last year, a new curriculum was also designed and executed, which was an advanced course for Sharada Lipi, which we delve deep into growth of Sharada Lipi, way forward, and also the historical aspect, so that we are more well averse with how Sharada Lipi has grown and what more needs to be done. And now coming up, in February 2023, we'll have a collaboration with Institute Sin, language of course, languages and literature, for an online workshop on Sharada Lipi. That is the way forward, I would say. Last year, during the basic courses, we inducted new teachers for these basic courses. So our team of teachers is growing also, as I would say. And the training programs are also generated a source of employment, because we wanted to hire teachers wherein we could also train and pay them, so that they are it's like a scholarship that they get for teaching Sharda. So that is how training programs have been through the year 2022. Now coming to achievements and recognition. Sharada Team Foundation had privilege to meet legendary Shri Anupam Kherji last year. As you all know, that he's really passionate about English culture and language. And, that's how we got to talk about our mission and present our views to him, and on the future of Sharada Lipi. He has always appreciated the kind of work, and he's very supportive of our work, and we're grateful to him also for providing us a foreword for our book, The Kashmir Praveshika. During this course, after we met, the team met Shri Anupam Kherji. Our team also got space in Kashmir News. We had the news had featured us in one of their programs, and they spoke about our work for preserving and promoting the original lipi of the Vitasta Valley. So yes, media recognition has come in. Efforts are being recognized. So it's actually a proud moment for all our team members, I would say. During the last year, we had, a lot of, achievements, I would say, in terms of publications as well. Matrika being one of them, as Kuldeep ji just spoke before. Apart from that, Kashmir Praveshika is one of a kind book that was much awaited, which focuses on how to read and write Kashmiri in Sharada Lipi. This book was released on 19th of June in the presence of Dr. Sudhir Sopory. He's with us right now, Dr. C.L. Rena, and also the Kashmir Files fame lead, Miss Bhasha Sumli. A proud moment again. This book has been, in great demand. People have been, have actually said that they are introducing this book to children to, promote Kashmiri language, which, is not all of us speak the way I'm not speaking right now. But yes, the book, I also hold one. So it is a very good book to own. I would strongly suggest everyone to order that book also and go through it. Next slide, Veronica ji. Now coming up, also I would like to mention a few steps that we are looking forward for on promotion of Sharada Lipi. Is we are working in collaboration with the Center of Incubation and Innovation Research Consultancy, CIRC Bangalore, for development of OCR, that is optical character recognition for Sharada Lipi. Again, it will be a big achievement on making the lipi digitally available to everyone. Our team, along with Shan Foundation, met with the Ministry of Culture and Indira Gandhi National Center for Arts. We had shared, that's also featured in our Matrika magazine, to discuss the roadmap of the CST Foundation. And as we speak, I think the people, the scholars who have joined our team are tirelessly working on transliteration of some very important Sharada manuscripts, which also includes one of the most intricate and complex text of Vigyan Bhairava. So
Krishna Stuti was done before it. It's been already featured. So our team of scholars actually given their heart and soul on working on these manuscripts and bringing to light the immense information and the details that we have on those manuscripts. So thank you everyone on working on those manuscripts, and thank you everyone for joining the session today. Over to you, Veronica ji. Thank you so much, Nidhi ji, for presenting the achievements of Core Sharada team in the last year of 2022. Now, moving on to the next session, another part of this program, which is awards. And every year, be it CST Foundation recognize scholars, achievers, and volunteers in the field of research, education, and trainings. This year, we are delighted to announce the most prestigious award on behalf of Core Sharada team, that is Lifetime Achievement Award, which is presented to Adarniya Dr. Chamanlal Raina ji. It was, of course, a surprise element for him, so he might not be aware of this. His contribution in the field of research has been immense. He has published more than 34 books related to the philosophy of the Agamas. His books have been published by the University of Kashmir, University of Rajasthan, and Sri Somnath Sanskrit University in Gujarat. Recently, his book on Malaleshwari and Kashmir Shaivism has been published by Sri Natraj Publications, Delhi, and its Shubhashna was done by Padma Shri S.K. Sopory ji. His works on Swami Krishnaju Razdan has been published recently in the book form of Krishnavali and will be released at the Central University of Rajasthan. He has written the Dash Mahavidya Nirupanam, which is still under printing and will be launching it soon. His paintings are focused on the Shakti Tattva. Apart from this tremendous contribution, he has been our guide and mentor for many years. Although Dr. Raina, we wanted to do this honor in person, but we couldn't choose more auspicious day than this Gauri Tritya to present this Lifetime Achievement Award to Dr. Raina. We hope to meet you soon and very, very soon in person and present this award to you. So I would just like to share the screen and just present the certificate to him. Dr. Raina ji, congratulations. Thank you so much for your guidance, your support, and your contribution in the field of research. You are an inspiration for all of us. Thank you so much. We are truly blessed to have you. Thank you so much. We'll soon meet you in person and we will give this award to you. So I would request Dr. Raina if he wants to speak a few words. Hello, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद. Yuzan toy ye award ditu you chu Sharada Sharada Team award. Which wasn't different from Sharada Team. I am a part of the Sharada Team, Core Sharada Team. I celebrate every and each syllable of what is being written in Sharada. That is the beauty of Sharada. I am just a disciple of Sharada. That is all. I am born in the Sharada Desh, and Sharada is in the core recesses of my heart. Dhanyavad again for choosing this honor to me, though there are many, many more persons for doing more and more job for the cause of the community, for language, literature, and other things, and agamas, etc. Thank you very much that you wanted to do it. I appreciate it.
I thank you very much. Shubham Sarvatra. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Rena. Now we move to the next award. Let me share the screen again. The next award is being presented to Sneha Bhushanji. She volunteered for teaching this basic course that we recently concluded in the month of January, just a week back. And she has been a great support throughout to the team. And this year, single-handedly, she managed all the classes. In fact, earlier we used to do it, me, Nidhi ji, Rakesh ji, but this time single-handedly, Sneha ji has managed to conclude the session on her own. Thank you so much for your selfless efforts, Sneha ji. She's also here, so I would like to call her here on. Yes, thank you, Veronica ji. Your camera on, Sneha ji. Yes, thank you very much. Yeah, so I would like to thank Rakesh ji and Veronica ji and CST for giving me this opportunity. And yes, going forward, I look forward to work with CST on more projects. Thank you very much for recognizing. Thank you. Thank you so much, Sneha ji. Thank you. Now the next award that goes to Ms. Anvika ji for her support, and she has been continuously assisting Sneha ji in concluding the basic Sharada Lipi course. So these two have really pulled off the show very well. Thank you so much, Anvika ji, for your support. Anvika ji is also here with us today. So, Anvika ji, are you still there? I would like you to say a few words if you're still here. I don't see her here in the group, I think. Yeah, I think she's left the meeting. Okay, moving forward. So before we conclude this session, we have a audiovisual message from Kalhan Rena, who has contributed towards the compilation of the book Shakti Upasana. So he has sent his message here. So I would like to play it for all of you. Namaskar. My name is Kalhan Rena. I'm a graduate in business management at Indiana University in Bloomington, Indiana, and currently I'm pursuing my MBA in entrepreneurship at Nova Southeastern University here in Florida. Thankfully, I was raised in a Hindi-speaking household, so I do speak Hindi and I have a little bit of working knowledge of the Kosher Zaban. I'm here to thank all of you present in this great spiritual gathering through this Zoom process. Hence, I address to Adanya Padma Shri S.K. Sopory ji, the former VC of the Jawaharlal Nehru University, Vidvat Alankrit Professor Beena Agarwal ji, former head of the Sanskrit Department of Rajasthan University, Pandit Rakesh Kaul ji, who organized this grand program, to Veronica ji and Jyoti, clubbing their annual function related to the Gauri Tritya, the goddess of learning, art, architecture, music, including drama and dance. It is she who is adored as Sharada Vrda Devi Kashmir Pura Vasini Tam Aham Prathaye Nityam Vidya Gyanam Todemahi. This is the adoration of two important constituents related to Vidya of the Dasha Maha Vidya treatise and Gyan, leading to the supreme realization. It is she who manifests in 1,000 forms, which are known as Sahasranams of the Agamas.
I'm here to thank Professor S.K. Sopory for providing the copy of the Rajanak Maheshwar Razdan Krit Shakti Stuti to my grandfather, Dr. Jamanlal Raina ji, who has done extensive work on the Shakti-related agamas. Thus was bestowed with the honor of Darshana Vachaspati from Varanasi, India. I had the great opportunity to have his MSS read while my visit to India and to email the manuscript to Professor Sopory ji. Thus my grandfather taught me the niceties of the Shakti Upasana. As told by the learned speakers about the Shakti Upasana, I would like to say that in my humble understanding, these 126 names of the Divine Mother is yogic in spirit and spiritual in content and transcendental in meditation, which I learned from my grandfather. I remember he would be wakeful in the nights for making the divine names of the Mother Divinity expressed with the Hindi for devotees and English for my generation in the diaspora, who cannot understand the Hindi or the Sanskrit of the scriptural nature. We are all very proud of him for all the scholarly work he does and the consistent efforts he makes to understand and convey the truths of Kashmiri culture and religion to the world. In a culture that is declining so rapidly, unfortunately, the diligence and the hard work of people like him and all of the esteemed people in this group and this audience are so critical to keeping our Kashmirians alive. Thank you all for your time. Orzo Bemyon Pranam. So before I hand it over to Jyoti Razdan ji to conclude today's session, I would like to thank all the speakers, all the presenters, Dr. Sopory ji, Dr. Bina Agarwal ji, Dr. Chamanal Raina ji, Naina Saproo ji, Professor Raval ji, everyone who presented here and who was the part of this today's program. Thank you, everyone. It's all because of the teamwork that we could put up such a show in front of you. And thank you once again. It's all, as we say, it's the teamwork, which is this is the outcome of the teamwork. So thank you once again. Our manuscript team, especially because of whom we could release this video today, the Krishna Stuti sung by Naina ji. So thank you once again. You deserve a lot of appreciation from Core Sharada team. Thank you once again. Now we are moving to the conclusion. I request Jyoti ji to please conclude the session. Namaskar, everybody. Wish you all a very happy Gauri Tritya. It's the beauty of our culture that we start all sessions with mantras of Devi. And all the Namaskar, everybody. Wish you all a very happy Gauri Tritya, and many congratulations to all our team members who that they have done such a great work of like publication of Matrika and all our publication, our Praveshika and all our books. What we have done last year. We salute all our team for all the work we have done this year. This is the beauty of our culture that all our sessions are started with the mantras of Mata, Sharada Mata, and another beauty is that we conclude our every session with mantras only. So today's conclusion, I'm reciting some lines from Uma Sahasranama. These are mentioning the beauty of Devi Sharika. Karotiya bibartiya nihantiya jagatrayam samantato vibhatiya na drashyate kvachaticha ya ativa gupta rupani guru pudeshnam antara na shaktiye budeshya bodham andhakari sundari. Namaskar, and thank you so much all for being here today. Thank you so much. Namaskar. Thank you so much, everyone. Thanks a lot. Namaskar. Namaskar, everybody.